नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे इस लाइव चैट शो में जिसका नाम है अनसंग हीरोज। एंड टुडे इज माय 80th एपिसोड। एंड एज यू ऑल नो दैट दिस अनसंग हीरोज इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं कॉमन लोगों को लेके आता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। और हम इस वक्त लाइव होते हैं 3 प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, यूट्यूब एंड लिंक्डइन पे। एंड उन लोगों को लेके आता हूँ मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, या फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर यंगस्टर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी या कोई अच्छा क्लास 1 ऑफिसर्स के पोजीशंस को हासिल किया थ्रू कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बेसिकल टू मोटिवेट द यूथ of this particular city. And yeah, I thank each one of you for appreciating my show and giving a good positive feedback. And because of that only I'm here on my 88th episode. And I look forward to take it, continue it till infinity, because I know that there are so many people who are working at the ground levels and I have to find them and then bring onto the platform. So my effort will be on. And today also I have a very very special guest, a young officer who is from a very remote village. And people from that remote village, उतने remote village में रहने के बाद बड़े सपने नहीं देखते हैं, बट लेकिन कुछ लोग होते हैं, 5% लोग होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं थ्रू डेडिकेशन, फोकस एंड कंटिन्यूअस एफर्ट. So commitment and consistency always pays. So as you can see, and I'll bring my guest to you. Before that, I've just made a video. Just go through that video, and once the video is over, I will directly bring my guest to you. So just enjoy this video. Namaskar, welcome Ashok. Thank you very much for accepting my request and being there on my show. Thank you so much, sir. I would like to express my gratitude for having me here. Thank you so much. And you deserve this place, this platform, because you are the one who actually is going to motivate youngsters of this particular city. Because yeah, so let's start the show. And अच्छा थोड़ा सा पीछे चले जाओ, बिकॉज आपका थोड़ा सा ऊपर का सिर कट रहा है, लोग आपको पूरा चेहरा नहीं देख पाएंगे. या दैट इज फाइन. परफेक्ट. Good. Is it fine now? Yeah, absolutely. Sir. Perfect. Okay, so Ashok, before we go, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे दो. Which place from you are from? कौन सा गांव से हो, कहाँ से हो, कितने पेरेंट्स, कितने भाई बहन हैं, फादर क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, so that our audience will get an overview of it. Sir, definitely, why not? Sir, as you have mentioned, my full name is Ashok Jaiswal, and I am basically from Korea district, which is definitely in Chattisgarh state. And I have done my primary schooling here in from my district. Then I did my +2 from St. Joseph Convent School, which is also here in Jharkhand, which is nearby my place. Then I did my graduation from Uttarakhand. I did my graduation in BSc Agriculture. I received my graduation degree in BSc Agriculture. Then I moved to Delhi to pursue my dream and to have a coaching on UPSC. In all of that, when I was doing all this, I gave 2-3 attempts, which unfortunately become abortive, and I could not clear the exam. And meanwhile, I was also preparing for some other competitive exam, and luckily, I appeared for
IBPS exam to become an agriculture field officer, and I cleared it. And now I'm working as agriculture field officer in Bank of Maharashtra, and I'm posted at Pune. Thank you, sir. Okay. आपने एक वर्ड यूज किया लकीली. Sir, Luckily you are selected as a field officer in. It's not luck. योर टोटल एफर्ट, आपने जो मेहनत किया यूपीएससी की तैयारी के लिए, वो कहीं ना sir, कहीं आपको इसमें सिलेक्शन होने का काम आया. आपकी मेहनत आपका रंग लेके आया. इट्स नॉट लक. मे बी sir. बिट ऑफ लक होगा, बट आई डोंट बिलीव इन लक दैट मच. Neither do I, sir. But why I'm emphasizing on this word luckily, because uh, I gave the exam to just to check my knowledge, to have experience of a competitive exam, and I gave the mains. I cleared. Then I went for interview. I appeared for interview. It went good. Then I saw my name on the merit list. Then I was like, okay, every hard work paid off, and Yeah, I am. That is why I'm using this word luckily, sir, because luck. I was not expecting. I Yeah, just went with the flow and they gave the exam, and it was a very nice experience, sir. And I'm having good time in Pune. गुड 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 गुड. नहीं, बट शायद अगर इफ यू हैव नॉट डन दिस थिंग ना, क्या बोलना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी नहीं करते और इस Sir, एग्जाम के लिए जाते तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल उतनी नहीं होती, शायद नॉलेज उतना नहीं होता definitely, sir. है ना. सो Definitely मैं वही बोलता हूँ preparing, लोगों को कि बच्चे लोग को, आप कुछ भी पढ़ाई करते हो, sir. anything you study, anything you knowledge you gain, it's going to help you in some stage of your life. If not today, like you are prepared for यूपीएससी, आपको यूपीएससी में मे बी अभी तक सफलता नहीं मिला है, बट certainly it has paid you to move to a different and a good position in life. Correct? Yes, sir, definitely. Before I started out preparing for UPSC, I was a different man. Now I'm a different man, sir. Uh, Personality uh, changed. yeah, definitely. It will definitely make you a different person. When I started out, I did not have any knowledge of UPSC, with the exception of the full form of UPSC. I didn't have anything. It was my friend Somesh Chakravarti who made me aware of this UPSC. When I was in the last days of my graduation, I asked my friend, "What should I do? Should I pursue further education or go for a job?" He was like, "What kind of job would you like to have?" I was like, definitely I would like to have a job in which I would interact with farmers and be helpful for them. And he was like, good, so why don't you have a bigger platform and go for UPSC? Then I started searching and reading about UPSC, and it intrigued me. So I started prepared for UPSC. I read books. I enjoyed it. Before uh, preparing for UPSC, I could read books. It was not like that I was not into books, but it took me more than a month, 2 months to complete to finish a book. But as of now, if I talk about now, I can finish a book of 300 pages within 2 days. So it was So UPSC preparation. yeah, so one thing is very clear कि बच्चों में हमको एक्चुअली पढ़ाई का जो आदत है वो डालना चाहिए. करेक्ट? बुक रीडिंग की आदत Definitely, हमको sir. लगता है कि स्कूल्स Book में ये बात को reading. पढ़ाया नहीं जाता. Sir, before you are making your child to read a book, first teach them to sit. Because I have seen people struggle sitting on a same place for more than 1 or 2 hours. They feel lazy, they get bored, and they like, no, I'm not doing it. I will do it tomorrow. Discipline is must, sir. It is imperative. You cannot achieve anything in your life without discipline. You have to have a discipline. If you and first and last, sir, that I watch motivational talks. I hear them. I read books. That one thing that have worked for me was a quotation that I always read, write, and tell to my friends, that if you want to achieve something, finish what you have begun. Finish what you have begun. If you first you talk to yourself, am I going to finish what I have just started? Is it worth it?
if I am going to read a book, suppose I'm going to read an experiment, my experiment with truth, written by Mr. Gandhi, Mahatma Gandhi ji. It was his autobiography. So if I'll start reading this book, will I be able to finish this? If yes comes from your heart, then definitely go on. If you think that I have too many jobs to do, then leave it. When you have time, then start it. Without commitment, without discipline, never start any work, or you will never be able to finish it, and it will be like unfinished job that is close to nothing. Either you finish 100% or you don't start it. Yes, don't start it, definitely, sir. जनरली लाइफ में ऐसे ही होता है, बच्चे मतलब यूथ स्पेशली एक टारगेट बनाते हैं या गोल बताते हैं, एंड दे स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल, और उसके बाद एक फेलियर आता है, दो फेलियर आता है, तीन फेलियर आता है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं कि मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है. बट आई थिंक Sir, बाय दैट टाइम दे ऑलरेडी रीच्ड 80% ऑफ देयर गोल. yes, sir, दैट definitely, इज द sir. सीक्रेट. Yes, yes, but that 20% is the real job that you have to यस. do, that you have to achieve. And, and reading book is it's a very hideous job, sir. It's a very tedious job. It's a very different task, difficult task. You would think that I will definitely read this book, but it does not work that way. You have to have a commitment. Be it friction book, non-friction, you're reading NCRT, you're preparing for a competitive exam, or you're appearing for your school exam. You have to have this commitment that I'm going to finish this, or definitely if you have this approach and attitude, you're going to finish the book. And if you like in the mid of reading a book or doing a job, completing a task, in the mid you feel like no, I cannot do this, definitely you will not do this, because you will not be able to do it, because before completing the job you have made up your mind that this is not my cup of tea. So how you are going to complete it? You have to have this confidence. Nothing is impossible, sir. Whatever nature allows you, you can do it. 50% of the battle is already lost once you start it half-hearted, Sir, you have right? to have a positive approach. That is my mantra, sir. That is what I think. That's the mantra for everybody, all successful people. Sir, Okay. So yeah, so just want to know about your, you did your MS BSc in agriculture, right? sir. And before that, I know Korea is a very remote village, not a very big city, or it's a village, Yes, sir. right? Yeah, it's a And village, sir. Kasba. Kasbah, and studying there in that, staying there in that environment, उसी environment में पूरे schooling बिता दिया आपने. उसके बाद फिर what ये thought कैसे आया कि मेरे को बाहर जाके बीएससी एग्रीकल्चर ही करना है? इज इट कि आपने Sir, बीएससी एग्रीकल्चर ही चुना था पर्टिकुलरली, और जो भी आया वो ले लिया? व्हाट वाज दैट? uh, I personally believe, sir, it is a part of luck. I had never been a meritorious student, sir. I have always been an average student. I could pass my exam, get a result, nice result, first division. It was good for me. It was everything for me. But there was a notion inside me that I have to do something big. Definitely, I'm from a small village. It is not. It is neither a village nor a town, but it is a good village. You can say it is not like you would not get whatever you want for your studies, or for your whatever you want for your But job or still a something. village, right? But still a village. As you can say it, it is. We are surrounded with coal. Uh, Yeah, coal, that's coal why. is everywhere. So it was definitely in my mind that I had to do something big, because I always knew that I had to elevate myself from where I was socially. In social stratification, I want to go to next level, to a height that my father is a government servant. So I knew that it was not like my father had lots of money for me, saved for me, that I was going to use in my future. I knew I had to do something on my own. So after completing my plus two, I met a person who also studied from Uttarakhand.
not the same college, but the same stream. And he talked me about the quality of education there in Uttarakhand then I decided and consulted to my father that I would like to go to Uttarakhand for my further education. And my father was always receptive and open minded. He was like, if you want to go and study, you can go. And I went there, gave the entrance exam, cleared it, and I spent my 4 year in Uttarakhand. So, And definitely, I would like to mention this, sir. Had I been there in Chhattisgarh doing my graduation, I would not be the same person I am right now. Because Uttarakhand made me what I am right now, sir. Because I was surrounded with many people who came from different culture, who knew different things, different languages, and there I understood the competition and the level of education that people had and the importance of quality education. That is what I understood studying and living there in Uttarakhand. Uh, I met so many people had different backgrounds. They studied different subjects in their school, and I saw people had ambition, which I never saw in my place. People had ambition, sir. They were ambitious. They were ambitious to do something. So I personally think that you have to have a background or a surrounding like that forces you to do something big, right, sir? yeah. So So you say, it was that feeling that I had, or that it was also the part of my education that I received from those people who were there and helped me and make me understand about the different perspectives or different aspects of education. That hmm, after graduation you will do this, you will do this, you will do this. So I had different options and opinions and perspectives, which I applied in clearing all this exam, sir. ओके. सो दो चीजें हैं इसमें अशोक. एक तो Sir. देयर इज अ सेइंग ना, जो बोलता है कि योर पर्सनालिटी you can be known by the average personalities of five friends you have. Sir, definitely, sir. You tell me your friends, and I tell you who you are. Yes, so that has worked for you once you have gone to Jharkhand. That is one. एंड सेकेंड, आपने जो बोला है कि मतलब आपने ये बोला कि अगर मैं यहाँ पे रहता तो मेरे को वो एक्सपोजर नहीं मिलता जो आपको झारखंड में That, मिला. तो यू sir, sir. इनडायरेक्टली टेलिंग दैट बिलासपुर या छत्तीसगढ़ में अभी एजुकेशन का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है. Uh, I would not say, sir, or I would not uh, tell you that you are wrong or you are right. But हाँ. that is what I felt when I went there, sir. ठीक है, Maybe, लेट्स बी maybe फ्रैंक. लेट्स बी फ्रैंक. no, sir. It was not the quality of education, but it was the options that we had. We had only two options: whether you go for doctor or you go for engineering. इंजीनियरिंग. Yeah, we had only two options, but setting myself apart and going and pursuing and taking different streams, BSc agriculture, it changed me. It helped me. So it was the options that we had. Only we had two options: doctor bano ya fir engineer bano. Back then in 2012 and 13, right, sir? So it was the options. I can also say, if I had the opportunity to know more about more options that we had, mass communications, agriculture, and others, then definitely situation would have been different. But करेक्ट. here I am not demeaning my state, sir. But what I'm saying Uttarakhand has become very helpful and beneficial for me and for my studies. That is what I'm telling about. I'm not demeaning my state. It is as good as any other state in India. Because of the knowledge you have gained in your schools and in your from your village school, that's the reason why you have got selected there. Na? So that way we can take it very positive. Definitely, sir. Why not? नहीं, बट ये अशोक ये बताओ, ठीक है आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया, अच्छा कॉलेज मिला, प्लस आपके अच्छा एनवायरनमेंट मिला है. बट ये Sir. यूपीएससी का, आई थिंक आपने यूपीएससी की भी तैयारी की है और यूपीएससी भी मींस कोचिंग वगैरह लिया है, तो ये यूपीएससी का कीड़ा Sir. कहाँ से आया? Sir. That is what I. मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ बिकॉज अशोक, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ बिकॉज बिलासपुर में मैंने बहुत पीएससी के बच्चों को, तो बहुत लोगों से मिला हूँ मैं, और बहुत लोग मेरे इसमें भी आए हैं. बट मैंने किसी से भी पूछा कि यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते हो या यूपीएससी की सोचते क्यों नहीं हो,
तो उनका एक ही कहना रहता है कि सर यहाँ पे हमारे पास वो गाइडेंस नहीं है या कोई कोचिंग नहीं है, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। सो मैं आपको आपसे जानना चाह रहा था कि वाई दिस यूपीएससी का कैसे आया आपके दिमाग में और किस तरह की तैयारी Sir, की है। you have asked three questions. I will answer one by one. या यू कैन पहला तो आंसर। सर पहला सर during the last day of my graduation or during my graduation days when I started conducting surveys in rural areas, I understood the rural India. I understood where real India lies in rural part. Then it was kind of registered in my mind that whatever I'm going to do, definitely these people should be benefited by them. ओके। It was first notion, but I didn't know about anything about the civil services and state PCS. Then I asked my childhood friend Somesh Chakravarti, whose name is he. I told him, I just gave him brief background what I would like to do. I told him that I would like to have a job where I would interact with farmers, rural India people, something like that. And he was like, "Why don't you go for UPSC then?" Then I started reading about UPSC, what UPSC was all about. Then I saw the pictures, the videos of IAS, IPS. Then it was all the more become interesting, like Lal Batti and yeah, all this perk and all power. Then it was like it is definitely congruous to my desire that definitely I will interact with people and at the same time have a very prestigious job. So it was this driving force that put me here. Then I started out studying for UPSC. Then I left everything behind, sir. It was, I don't know, maybe it could have been a bad decision, but I left everything. I was preparing for MSc. I gave JRF, which I thought I would have cleared if I, maybe I did not, the result did not came out, the exam cancelled. It was this situation that followed. My exam cancelled, my MSc JRF exam cancelled, my MSc result did not come out, and I was made up my mind. I made up my mind that I was going to prepare for UPSC. Then I left everything behind. Then I went to Delhi and joined Wajiram, Wajiram coaching. Here, I would like to also mention that, sir, that I'm not promoting this coaching or telling student to go to coaching, but this is my journey or my what I did. I'm sharing with you all. So Yes। I don't want anybody to in any way think that I am telling them to go to Wajiram. This is a separate topic that we'll talk about. And second, your question, sir, how people from cynical background, from this humble background, from Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, where we don't have very prestigious or quality coaching for civil services. यहाँ सर मैं ये बोलूंगा कि जो मेरी फिलॉसफी है सर, जो मैं इतने दिन और सालों में मैंने सीखा है, इफ यू हैव टाइम और मनी, definitely go and join coaching. But if you have limited money, then you can join online coaching. और सबसे बढ़िया रामबाण सर ऐसा है कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर चीज मिल जाएगा आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने आता है ना। टेलीग्राम है सर, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनका वी हैव नेवर यूज्ड देम इन अ गुड मैनर। वो हम इनको अपना टाइम ही वेस्ट करने के लिए काम करते हैं। नहीं तो सर टेलीग्राम में तो आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको जो भी वीडियोस चाहिए। तो जिसको लगता है कि हमें कोचिंग की जरूरत है, कोचिंग हो सकता है सर, मैंने आपको बताया, इट डिफर्स विद डिफरेंट पीपल, इट माइट help others, it might not help you, it might be workable for others, it might not help me. तो कोचिंग सर मेरे लिए तो बेनिफिशियल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रिसाइज, मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं था। हो सकता है सर ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक आई हैड टू कम बैक इन द मिडिल ऑफ कोचिंग एंड it was shut down, the coachings were shut down, and it was directed by the higher authority or government that you have to conduct your classes online. You're not supposed to conduct your classes physically. So in the middle of coaching I had to come back. So मेरे लिए पर जितना experience था सर throughout 6 months when I've been there, I did not find anything productive. So अगर सर
बंदे सर अगर अच्छे हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे अगर हम्म, अच्छे हैं, स्टूडेंट, और वो गलतियों से सीखना जानते हैं, तो आज नहीं तो कल वो सीख जाएंगे। हाँ, अगर फिर भी उनको लगता है कोचिंग की जरूरत है, तो अगर आप पे है सर, यू कैन अफोर्ड इट, देन डेफिनेटली गो जॉइन इट, इट विल बी बेनिफिशियल इफ यू कैन अफोर्ड इट। But if you don't have time, you are starting your preparation at the age of 25 or 26 and thinking that I would go and join coaching and spend my 2 more years. It is not prudent. It is not going to benefit you, because at the age of 28 you will give a first attempt, and when you are going to join the services, because yeah, it is you don't have any guarantee that you are going to clear at your in first strike. It is not, you cannot give any guarantee, you cannot assure yourself that, first because attempt. the preparation is not never complete. Your preparation will always be half, you will feel, because the syllabus is immense, competition is hardcore. So you would feel like, am I आपको be लग able to clear it or not? तो सर तैयारी तो लगेगी। बाकी कोचिंग के लिए सर, मैं जो चाहते हैं कोचिंग करना, उनको मैं चाहूंगा, जैसे मैंने एक अपने फ्रेंड के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था, कि आप एक बार किसी बड़े शहर में चले जाओ, बीट दिल्ली, बैंगलोर, कहीं भी, वहां आप एक महीने लाइब्रेरी ज्वाइन करो, वहां आप लोगों से मिलो, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, और आपको बहुत डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव मिलेंगे कि आगे करना क्या है, कोचिंग करना है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे पहले पूछ लेना चाहिए, तो पैसा है तो आंख बंद करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले सर बता दिया था कि मैं वहां 1 साल से ज्यादा ही था, मुझे 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए थे वहां पर। तो पैसे की मेन तो सर, इट इज ऑल अबाउट मनी। मनी। If you are taking loan and going to join a coaching, and at the end of the day you find like it is not good for me, तो सर वो पैसा भी वापस नहीं होगा और आपका समय भी खराब हो जाएगा। तो लगता है तो सर ऑनलाइन सर बेस्ट है सर, अब तो ऑनलाइन बेस्ट है, वो थोड़ा तो अफोर्डेबल भी होता है। हाँ, तो अशोक, मतलब आपकी बातों से मैं एक सारांश निकालता हूँ। तो आप जैसे ने बोला था, आप जैसे बोले कि अगर पैसा है, समय है, तो बेहिचक आप जाओ, कोचिंग करो ऑफलाइन। बेहिचक, यस सर, डेफिनेटली है। बेहिचक। बस हाँ, और प्लस कोचिंग में जब आप जाते हो बाहर के शहर में, आपका जितना भी फीस होता है, 2 लाख होता है या 1.8 लाख, तो उसका डबल आपका रहने खाने का होता है। करेक्ट। रहने खाने का, यस सर, तो डेफिनेटली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। ओके। दूसरी बात डेफिनेटली है, सर वो। हाँ, दूसरी बात है कि अगर आपके पास समय है, पैसे नहीं है, तो गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। सर करेक्ट। सर सो डेफिनेटली, क्योंकि सर, क्यों, बिकॉज यू वुड बी स्पेंडिंग योर टाइम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड डेफिनेटली इट विल take your half an hour. Cumulatively it will be 1.5 hour every day. You are spending 1.5 hour traveling from one place to another. It is uncalled for. वो आपको लगता है अनप्रोडक्टिव। सर जी। हाँ, वो हमको लगता है कि यार 1-1.5 घंटे में क्या होगा सर, 1-1.5 घंटे में तो जिंदगी पलट जाती है पूरी। नॉट और ओनली दैट, प्लस खासकर, उस वक्त में आपकी एनर्जी भी तो वेस्ट हो रही है ना। योर बिल्कुल सर, कंसंट्रेशन एनर्जी इज वेस्ट गेटिंग हो रही है। डिस्ट्रैक्टेड। you are you have lack of time, and you are spending your time in a very unproductive way, and one productive thing, तो वो आपको अच्छा भी नहीं है, आपका एनर्जी भी जाएगा, आप आ भी जा रहे हो, फिर वो डिमोरलाइज करेगा, वो एक्टिविटी आपको डिमोरलाइज कर देगी, यार मेरे पास समय नहीं है। आपके पास पहले ही समय नहीं था, फिर आप इन चीजों पे उनको वेस्ट कर रहे हो, आई वुड नॉट से स्पेंड कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। पैसा है और समय नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग सर, जब आपका माने रिकॉर्डेड पूरे रहते हैं, यू ओपन योर वीडियो, वॉच इट whenever you feel like, और उससे आपका धीरे धीरे वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और तीसरी बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर आपके पास है तो 1 महीने कहीं सिटी में चले जाओ, तो सर ज्वाइन करो, माहौल को समझो, स्ट्रेटजीज को समझो, ठीक है, एंड देन find a way out and then come back and do start studying having with that focus. सर डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली हेल्प those who think, is it important for me to join a coaching, specifically for coaching। अगर आपको लगता है, आप लाइब्रेरी आ जाओ, आप वहां 1 महीने का रेंट का रूम ले लो, उससे आपको दाल और तेल का रेट भी पता चल जाएगा, रूम का हिसाब भी पता चल जाएगा, और आपको एक चीज पता चलेगा, वेदर द इन्वायरमेंट इज कंड्यूसिव फॉर मी और नॉट। बहुत लोगों को सर जी होम सिकनेस भी होता है, वो बाहर रह भी नहीं पाते हैं। 1-2 महीने मैंने कितने लोग कोचिंग में देखा सर जी, आज मेरे साथ जितने जुड़े थे, आज कोई नहीं जुड़ा हुआ है, सबने यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी। सस्टेनिंग दैट इंथुजियाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। वो बहुत जल्दी हट जाती है लोगों में, कि यार मेरे से अब तो नहीं हो Yes. पा रहा है, अब क्या करूं। हाँ, वो एक है, प्लस ऑल्सो योर कंपनी मैटर्स ना, कंपनी इन द सेंस योर फ्रेंड सर्कल मैटर्स, बिकॉज सब लोग बाहर डेफिनेटली से सर। बाहर आए होते हैं,
एज भी वैसे ही रहता है, बिकॉज यूथ है ना, दैट अपना एज भी ऐसा रहता है, दोस्त दोस्त मिले, पता नहीं कैसी आदतें मिल जाती है, कैसे, इट्स वेरी सर डिफिकल्ट टू हैव अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। डेफिनेटली सर, इट इज माय पायलट प्रोजेक्ट सर, दैट आई ऑलवेज लाइक टू टेल पीपल, एक महीने आओ, पहले सब कुछ देख लो, एक महीने में सब कुछ पता चल जाता है सर तुमको। टू बी वेरी प्रिसाइज, अपनी स्थिति, अपनी सिचुएशन समझ में आती है कि मैं कहाँ, वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ इनके बीच में, या फिर इंडिविजुअली भी मैं कितना आज तक पढ़ा, मैंने आज मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पढ़ना क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सर, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सर, इफ यू डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस यू विल लॉस्ट इन डार्क। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज ऑल दैट यू हैव, दैट विल बी योर गाइड। तो करेक्ट। इनको आप अपने हाथ में रखो, दिल्ली बेंगलोर वहां चले जाओ, एक महीने रूम लो, एक महीने लाइब्रेरी ज्वाइन करो, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा सर ये। उसमें एक महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे मेरा अपकमिंग 1 ईयर कहाँ रखना है या मैं कहाँ होऊंगा, उसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं सर ये, जिनको, फॉर दोज हु लैक मनी, उनके लिए सर जी, टाइम एंड मनी, जो जिनके पास टाइम और पैसा है भरपूर, वो तो मस्त जाए सर, कोचिंग करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा उनको कोचिंग भी अच्छा लगेगा, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर मेहनत कर गए दे विल सेल थ्रू सर डेफिनेटली। ओके, सो अब आते हैं बिलासपुर। ठीक सर है, हमने बहुत सारे, आपने बहुत कुछ लोगों को बता दिया है, एंड आई थिंक दैट्स सर्टेनली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड हु एस्पायर टू बी यूपीएससी एट बिलासपुर। तो जहाँ तक मेरा ये पता है, बिलासपुर में अभी यूपीएससी की कोचिंग नहीं है। लोग, मैंने देखा सर है कि केवल पीएससी की कोचिंग करते हैं, देयर इज नो कोचिंग क्लासेस। So you have told also that you have used the digital library, central library, for your studies. So one is, how is this central library beneficial for the students? एक क्वेश्चन मेरा ये है। सर और दूसरा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेके आ सकते हैं अपने डिजिटल लाइब्रेरी में, डिजिटल कंटेंट को, सो दैट स्टूडेंट्स हु आर नॉट हैविंग मनी कैन ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम दैट, so that they can achieve the they can achieve their goals. हाँ सर, फर्स्ट आई वुड आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ any library can be beneficial for any student. Sir, I always recommend and emphasize on the fact that people, student must go library. It is not that I have a perfect environment inside my house and I can read as many books I want, as many hours I want to. But it does not work that way, sir. Library is a place where you will find people like you, who are the aspirants, who have who are going to achieve something, who have ambition. You will find people like you. Then you would go there, and if you sit there, you will definitely open book. You will not lay down because it is not your house. You will open book. You would read book. It will benefit you. Second, discussion. That I always tell my colleagues or my juniors, then discussion is something that will lessen your burden. If you're going to read something in 1 hour, that will be completed within 10 minutes if you have a proper or a quality discussion with your friends. Second, third, if I to be very precise and specific about the central library in Bilaspur, the space is immense, sir. I always liked the space that is created inside the library premises. You have immense space. You can walk around. You can talk to people. You can go outside, discuss, come back. You have newspaper section. Everything is just organized and perfect. So I always liked being there, sir. I always miss being a student, that I cannot go back. But I am still a student. But the environment that I had inside the library premises, I always miss. And सेकेंड, डिजिटल लाइब्रेरी सर कैसे उनके काम आएगा, Yes, और उनमें that's हम क्या और अमेंडमेंट कर सकते हैं। पहली बात सर, डिजिटल लाइब्रेरी तो हैंडी है, आपको बड़ा बड़ा किताब लेके घूमने की जरूरत नहीं है कहीं भी। और उसमें मेरे ख्याल से 6000 बुक्स थे सर शायद ना, जहां जब मैं शायद था, तो हाँ उसमें शायद अभी बढ़ गए होंगे। तो यू हैव, आपके पास दुनिया भर की किताबें हैं, जिस भी टॉपिक में आपको चाहिए, पर्टिकुलर
टॉपिक पे आपको बात करना है, आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हो, सोसाइटी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको अकबर के बारे में पढ़ना, आप अकबर के बारे में पर्टिकुलर उसमें उसमें जाओ, अकबर को सर्च करो और उसमें अकबर के बारे में पढ़ो, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर है, आप उसके इसके नोट्स बना लो, नोट्स बनाने हैं तो, या दोबारा आप उसमें जाओ, दोबारा पढ़ लो। ये आपको सबसे जो परफेक्ट सर्च है कि आपको बड़े बड़े बुक लेके नहीं घूमने हैं कहीं भी। ये डिजिटल लाइब्रेरी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, कहीं भी बुक लेके नहीं आना है, 2-2 4-4 किलो का आप बुक लेके जा रहे हो कहीं पर, कितना आप उसको कहाँ ले जाओगे, और वो पढ़ने का भी नहीं है। आप डिजिटल लाइब्रेरी को आपने खोला, आप कोई भी टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, माउंटेन पढ़ रहे हैं, आपने डिजिटल लाइब्रेरी खोला, आपने माउंटेन का रेफरेंस लिया, पढ़ा, अपने नोट्स बनाए, आप चले गए। कोई भी चीज आपको कैरी करने की जरूरत नहीं थी, वो चीज वहीं पड़ी हुई है। दोबारा आप आओगे वहीं पर, उसी टाइम उसी पेज पे खोलोगे, दोबारा पढ़ोगे, अपने नोट्स बनाओगे, चले जाओगे। और मुझे सब मैंने जब मैं वहां था तो वहां भी मैंने कुछ सजेशन किया था कि आप कुछ कुछ मैगजीन्स उसमें ऐड कर दीजिए, जो डिफरेंट कोचिंग के मैगजीन होते हैं, कुछ गवर्नमेंट मैगजीन होते हैं, योजना और कुरुक्षेत्र सर, वेल नोन बेस्ट को मैगजीन्स दैट वी हैव, जो गवर्नमेंट पब्लिश, जो इसको पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल उसको पब्लिश करती है, नॉट श्योर। तो वो सर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट एग्जाम मतलब गवर्नमेंट का क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। गवर्नमेंट का एग्जाम आएगा आप सर, और आप कोई भी एग्जाम उठाइए, मैं उसके बारे में बताऊंगा बाद में, करेंट अफेयर्स का कितना महत्व है। आप गवर्नमेंट का एग्जाम, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट आते हैं, इकोनॉमी सर्वे आता है, बजट आता है, ये सब उसमें ऐड करना, जो मैंने बोला था सर कि जब भी हर साल जब भी नया पब्लिश होगा बजट और इकोनॉमी सर्वे, तो उसमें आ जाए। बाकी तो सर वो बहुत अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा है, और मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट शुड रिफर टू दिस डिजिटल लाइब्रेरी, दैट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर देम। इनफैक्ट अभी वी आर गोइंग अ स्टेप फॉरवर्ड। अभी जो हमारे जो बिलासपुर स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ना, सो वी आर प्रेजेंटली रनिंग ए प्रोजेक्ट वेर इन वी आर टेकिंग द डिजिटल लाइब्रेरीज टू द स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स। अमेजिंग सो सर। हाँ, तो अगर जब वहाँ पे चला जाएगा और अगर हम बच्चों को कंटेंट दे देंगे और उनमें रीडिंग हैबिट डालेंगे, सो देन आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। बहुत अच्छा होगा डेफिनेटली सर, बहुत ही अच्छा होगा सर। रीडिंग हैबिट इज मस्ट, रीडिंग हैबिट, एक बार बच्चे अगर बैठना और पढ़ना सीख गए सर, पढ़ना बैठना ही सीख गए कि हमें 2 घंटे तो बैठना ही है, उनका सर जी रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ, वो फिर उनको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। जो सर आज के जो अभी जो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर, जो कि पहले हमको भी नहीं मिला था, अभी भी बहुतों को नहीं मिलता है, बट अगर वो रीडिंग की हैबिट हो जाए, पढ़ने की ही, तो सर वो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, एंड स्पेशली इसलिए भी बिकॉज अभी जो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो वी आर टेकिंग दिस टू 21 स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स इन बिलासपुर। बट हमारा जो एम है कि अगर ये कंटेंट एक बार क्लाउड में अवेलेबल होगा तो सेम कंटेंट हम रूरल स्कूल्स में भी लेके जाएंगे। हमको वहाँ पे केवल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। सो रूरल में, गांव में जो बैठे हुए, जैसे आप अपने गांव से आए, तो वो गांव में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो अगर इंटरेस्टेड है तो वो वहीं से एक्सेस कर सकता है। सो दैट इज द डेफिनेटली अल्टीमेट गोल। अमेजिंग सर। या, सो दैट इज द अल्टीमेट गोल। ग्रेट। So yeah, तो in the next few months, maybe year or so, बिलासपुर में आईटी के क्षेत्र में एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। ओके, सो या अशोक, चलो ये तो हो गया हमारी आपके पढ़ाई की बातें। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपका क्या सोचा? मीन्स आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया इज सो वेरी पावरफुल एंड जॉब्स कम है, गवर्नमेंट जॉब्स एज यू नो आर वेरी लेस, प्राइवेट जॉब्स हैं, बट प्राइवेट जॉब्स में जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हर समय लगा रहता है। सो क्या आज के युवा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह हैं जो हम क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। तो what do you think about entrepreneurship? Should a youth of today think only about job, or you should also think about entrepreneurship? Definitely they should move to entrepreneurship sir, definitely they should move to skill setting. They must, in the situation of the country that we have as of now, we are struggling to provide quality jobs, quality government jobs to our youth. Definitely we should instill the skill setting should be there. We must equip student with different skills so that they can become entrepreneur, they can go inside the entrepreneurship. और कैसे होगा सर? जैसे सर जापान में कैसा होता है, जापान एक एग्जांपल ले लो आप, स्कूल में वहां पर
घड़ी बनाना सिखाया जाता है, वहां पर हम्म। स्कूल में इंजन को रिपेयर करना सिखाया जाता है, पेंटिंग कराना सिखाया जाता है। व्हाट इट इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। वो उनको स्किल सेट दे रहे हैं। कल अगर उनका मन गवर्नमेंट जॉब का नहीं किया, जो कि उधर उतना ज्यादा उधर नहीं है, यहाँ हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब लोग वो परेशान है सर। पर ऐसा तो कुछ, बिलासपुर मैं तो ज्यादा। सर मैं तो सर, मैं पर्सनली कभी, जैसे अभी मेरे कोई मुझसे जूनियर पूछता है कि गवर्नमेंट जॉब करूं या फिर मैं अपना कुछ अच्छा कुछ काम करूं, तो मैं तो सबसे पहले बोलता हूं अपना काम करो भाई। गवर्नमेंट जॉब मतलब पेन, पेन, आपका इंजॉयमेंट खत्म, पूरा खत्म। डिसिप्लिन, सोना खत्म, खाना खत्म, सब खत्म। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। हम्म। तो अगर आप पे कोई स्किल है, अच्छा स्किल है, या फिर आपने उसको डेवलप कर लिया उस स्किल को, डेफिनेटली यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आप अपना काम स्टार्ट करो, आपको करना ही है ये। दिस इज अ वेरी हाई टाइम सर। वी हैव टू शिफ्ट एंड मूव फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स टू अदर सेक्टर्स। हमें सर, कितने लोग हैं अब। दूसरी, इंटरनेट सर ऐसी चीज आ गया, डिजिटल इंडिया ऐसा हो गया है कि ये करेक्ट। एकमात्र टेक इंडस्ट्री ऐसी है जो रात भर में आपको जो बनना बनाएगी, करोड़पति अरबपति जो बनना है आपको। आप ओयो ओयो के उसको देख लो, मिस्टर अग्रवाल जो हैं, आप हम्म। ये सब टेस्ला वेस्ला सब क्या है सर, ये तो टेक का इस्तेमाल कर तो रहे हैं, रात भर में करोड़पति बन रहे हैं। बाकी और कोई मुझे नहीं लगता दुनिया जिंदगी में आपको कोई ऐसा कुछ मिलेगा जो रात भर में आपको स्टार बना यस। दे या फिर करोड़पति बना दे। तो इंटरप्रेन्योर तो सर मैं तो बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करता हूँ इस पे, लोगों को बहुत ही मैं इसके लिए इंकरेज करता हूँ कि आप उस पे जाओ। अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब आपको करना है और एकदम आप लगे हुए हो, ठीक है, उसके लिए आपको नहीं मना किया जाएगा। लेकिन अब यूथ को थोड़ा सा शिफ्ट करना है सर, जो कि हो भी रहा है। अभी आप अपने साइड देखोगे अभी। तो आपको मिलेगा। हाँ, अभी सर रूरल इंडिया में क्या है सर, जैसे छत्तीसगढ़ इज अ डेवलपिंग स्टेट, हमारे यहाँ हर यूथ को लगता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तभी इज्जत है, हाँ। तभी सब कुछ है। हमारा ये होता है। लेकिन सर बड़े शहरों में भी ऐसा नहीं है। आप नहीं। पुणे आपने खुद रह के बैंगलोर जाइए, वहां लोग अपना करने का कुछ सोचते हैं। अगर यस। थोड़ा उनको बैंक से हेल्प मिल जाए, कहीं से उनको पैसा मिल जाए, वो अपना काम स्टार्ट करते हैं एंड दे एक्सेल इन दैट। ऐसा भी नहीं है कि यस। वो उसको, अच्छा वो सर उससे भी बहुत बनाते हैं। तो मैं तो सर पर्सनली चाहूंगा कि लोग स्किल सेट डेवलप करें। सबसे मेन सर स्किल सेट, वो स्किल कुछ भी हो सकता है सर, जरूरी नहीं है कि आप स्किल का मतलब है कि वो जहाज बनाएगा वही स्किल, उसी को आप स्किलफुल बोलोगे। नहीं सर, छोटे छोटे स्किल भी होते हैं। लोग खादी का काम कर रहे हैं, लोग फूलों से अगरबत्तियां बना रहे हैं डिफरेंट वेज में। लोगों ने टेक का इस्तेमाल किया, एग्रीकल्चर को हाईटेक बना दिया। ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए। तो क्या है सर इंटरप्रेन्योरशिप है, टेक का इस्तेमाल है। तो लोगों को मुझे लगता है सर, टू इन दिस जनरेशन, tech accompanied with entrepreneurship will definitely bring a new revolution। उनको टेक इस्तेमाल करके अपना कुछ नया नया कुछ इनोवेट करना चाहिए, वो सक्सेसफुल होंगे सर। हाँ अशोक, ये एक्चुअली आपने सही बात बोला है। बट यहाँ थोड़ा सा एक चीज और भी है कि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे देखें, जैसे आपने बोला कि बच्चों को स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, करेक्ट सर ना। लेकिन लेकिन ये होना चाहिए 8th या 9th क्लास से, जैसे आपने बोला जापान में होता है। सर लेकिन ये बताओ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम कहाँ पे बच्चों को बोलते हैं भैया तुम ये स्किल देखो, तुम अगर डांस में अच्छे हो या पेंटिंग में अच्छे हो तुम उसमें एक्सेल कर रहा है। हमको तो हर समय 7th 8th से तो यही बोला गया था ना, 95% लेके आओ तभी आपको इंजीनियरिंग में सीट मिलेगा। सर तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, करेक्ट। डेफिनेटली सर, वी नीड रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन सिस्टम इन आवर सोसाइटी। दिस इज अ वेरी हाई टाइम। हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि जॉब ही लाइवलीहुड का मेथड नहीं है। हम अपना लाइवलीहुड खुद भी क्रिएट कर सकते हैं विथ राइट मेथड एंड राइट अप्रोच। एब्सोल्युटली। सो मेरे ख्याल से आज के जमाने में लाइक यू हैव टोल्ड ना, सोशल मीडिया हैज बिकम सो पावरफुल। एंड पहले के जमाने में ऐसा होता आप था। पे अगर 95% होगा तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो आपको सोसाइटी में ना ही नौकरी मिलेगी, ना ही इज्जत मिलेगी, ना ही छोकरी मिलेगी। अल्टीमेटली वही है ना सर। करेक्ट पर करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत अच्छा काम अब रोल आता है, द रोल दैट द पेरेंट विल हैव टू टेक। पेरेंट्स को अब ये चीज समझना होगा कि स्कूल का काम जो है वो तो करेंगे ही, हमें भी साथ ही साथ बच्चों को इंकरेज करना है कि अगर आपको म्यूजिक पसंद है, आप साथ ही साथ परस्यू करो उसको। उसको हमारे घर में म्यूजिक बजाने लगा तो शुरू बोल देते हैं बाबा इससे कितना कमाओगे तुम। उस सीधे वो लाइवलीहुड की बात आ जाती है। इसको कौन सी नौकरी अब मिलेगी। उस 10th 9th 10th क्लास के बच्चों को आपने पहले ही बोल दिया लाइवलीहुड, और उसके अंदर चला गया वो, फिर गया, फिर जो भी उसका मन होता है या जो फिर उसका चाहता मन कि मैं करता है। दैट आई वांट टू Absolutely. अचीव दिस इन माय लाइफ,
वो आपने शुरू से ही उसको डिस्कार्ड कर दिया, आपने सीधे फेंक दिया। Yes, तो yes. ऐसा नहीं सर, ये पेरेंट्स का रोल आता है। पर सर यहाँ फिर एक और प्रॉब्लम आता है, हमारे पेरेंट्स ही बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है, बात फिर आ जाता है। फिर यहाँ पर रोल आता है टीचर्स का। वो ट्यूटर हो सकते हैं, आपके स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, जो बच्चों को इंकरेज करें कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, इसमें भी लाइफ है। आप स्कूल में भी आप एक बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही ना पढ़ो। आप अपने स्कूल को भी अच्छे से टाइम दो, लेकिन आपका अगर पैशन ही है, आप इसमें भी अपना टाइम दो अच्छे से। लोहे का काम करना है, आप आप ड्राइवर अच्छे हैं, आप जेसीबी अच्छा चला ले रहे हैं, क्या है सर, ये सब Yes. स्किल है हमारे यहाँ Yes, देश की। absolutely. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे देश में इनको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इज्जत लेकिन नहीं ये देते स्किल हैं। है। लोग सालों साल सीखते हैं, तब जाके सर ये सब स्किल आती है, करेक्ट। जिसके लिए उनको पे किया जाता है। तो इससे भी है सर, सरकारी नौकरी हर कुछ नहीं। और आज की डेट में तो सर जी, जिस तरह से देश का माहौल है, वी आर गोइंग फॉर या प्राइवेटाइजेशन, और कंपटीशन इज वेरी हाई। लोग एक या हर एवरी ईयर वी आर सीइंग दैट people are graduating. We are outnumbered by 1000 people, 1000 graduate every year. एवरी। सीट उतनी ही है, ग्रेजुएट रोज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट अब क्या करिए, गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लाइक आपके आपका कंपटीशन टफ कर देगी, एग्जाम आपके टफ होंगे, फेसेस में एग्जाम होंगे। अब सर आप देखो ना, यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, क्या इनमें फर्क रह गया है? कोई फर्क नहीं रह गया है सर। सभी एग्जाम 3 फेज में हो रहे हैं। कभी कभी ऐसे एग्जाम थे जो 1 फेज में होते थे, आप 1 फेज एग्जाम दो जाओ, या फिर हार्डली 2 फेज इंटरव्यू भी। अब तो सर आप एसएससी दो, आप बैंकिंग दो, आप यूपीएससी दो, आप सीजीपीएससी दो, सब 3 फेज में एग्जाम हो गए। सब कोई इनमें कोई डिफरेंस कुछ खास बचा नहीं है। थोड़ा लेवल ऑफ जो हार्डनेस है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो मैं चाहूंगा सर, मैं पर्सनली, कि इसमें जिनका जो रोल है वो अपने रोल को प्रॉपर निभाएं, तो पेरेंट्स, टीचर्स आई और थिंक ट्यूटर्स। आई थिंक ये भी बहुत सर इम्पोर्टेंट यू है आर नॉट कि ऑडेबल सर। नॉट ऑडिबल। हेलो, कैन यू हियर मी? नो सर। क्या हो गया? वुड यू अनम्यूट योरसेल्फ सर? अभी आ रही है? आपकी आवाज कम हो गई बल्कि। नो सर। नो नॉट, मेरी तरफ से तो ठीक है पूरा। एकदम आवाज नहीं आ रही क्या? लेट मी चेक सर। यू आर म्यूट। वेट अ सेकंड सर। सर नाउ स्पीक सर। आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? नो सर। क्या हो गया? ऑडियंस को सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है? ऑडियंस कैन हियर माय वॉइस? सर नाउ? आई एम एबल टू हियर यू, स्ट्रेंथ 5। सर? Yes. Yeah, I'm able to hear you. YouTube में है clear. Should I connect एकदम- again, sir? Yeah, just disconnect and connect again. I think there is some problem in audio. He's not able to hear me. And but yes, I hope audience can hear me. Can you give just audience if can give the comments? ओके सो जैसे अशोक बता रहे थे कि पेरेंट्स हैज टू बी वेरी वेरी एजुकेटेड, पेरेंट्स हैज टू सपोर्ट द चिल्ड्रन। अगर बच्चे को हमको एंटरप्रेन्योरशिप में देना है तो पेरेंट्स एंड टीचर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। स्पेशली पेरेंट्स का रोल बहुत होता है, बिकॉज पेरेंट्स अगर बच्चों को एनकरेज करेंगे कि हम किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप फायदेमंद है, तो बच्चे अपना स्किल्स को पहचान पाएंगे और वो जॉब करेंगे, वो उसको एंजॉय करेंगे। So, can you hear me? आप म्यूट पे हो। Hello. हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. My internet got exhausted, sir. Then I again connected. Sorry for disruption, sir. Yeah.
So yeah, so the अशोक, जैसे आपने बोला था ना, पेरेंट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज बच्चे, पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्पेशली पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स हैव टू एनकरेज देयर स्टूडेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टू डू व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे लव टू डू, जो सर होता नहीं है बिकॉज ऑफ द जॉब इनसिक्योरिटी व्हाट द पेरेंट्स थिंक सो। बट जैसे आपने ये भी बोला था कि हमारे पेरेंट्स खुद ही उतना एजुकेटेड नहीं है, एंड दे, सर उनका जो विजन उतना वाइड नहीं है, बिकॉज हमको बचपन से यही बोला गया था कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन आज के जमाने में बिना पैसा खर्चा किए आप घर में बैठ के पैसे कमा सकते हो, सोशल मीडिया यस के सर, पावर। financial problem is a thing of past. Now we have फास्ट। different financial institutions who are there to lend you money. यस। If you have, you are capable, you have capacity, and you have a vision to do something big, they are there, definitely lend you money. It is no problem right now. It is a thing of past. Especially government is also supporting na Startup India and all those schemes which are coming. It's basically encouraging the students. We have different schemes launched by Indian government, sir. If you know how to avail them, we can use Yeah. them to for our benefit, for our benefits. Yeah, yeah. So yeah, that was thing, and also now I think schools में अभी जो नया education policy आया 2020, अगर वो implement हो जाएगा, they are encouraging this skills development, and also as of now Niti Aayog also has a thing called Atal Tinkering Labs, which are from class 8 Sir. to 10, which Hmm. encourages the students to have creative scientific science this thing projects. So Sir. है बहुत सारे schemes हैं, and like you rightly said Ashok, people should start thinking towards entrepreneurship as a career. High time now. People should Definitely, sir. even in my talks मैं भी बताते रहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी सोचो, जॉब एकमात्र चीज नहीं है, विकल्प नहीं है करके। सो या आई थिंक आपने जब बताया तो लोगों में ज्यादा ये आएगा कि बिकॉज यू हैव स्पोकन फ्रॉम योर माउथ, तो मैं बार बार बोलते रहता, तो पीपल लाइक नॉट बी टेकिंग इट सो सीरियसली। नहीं सर, वो लेना है सर। हमारे अगर आपके पास स्किल सेट है कोई भी, तो आप इनसिक्योर नहीं रहोगे जॉब के लिए। अगर आपको पता है कि मुझे इसमें मेरी प्रोफिशिएंसी है, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, और आपको इंकरेज कर रहे हैं आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, कि आप जो करना चाहते हो उसको करो, तो सर वो डेफिनेटली दे विल कम अप विद ट्रू कलर्स। वो अच्छा ही करेंगे। करेक्ट, ग्रेट। 50 मिनट्स हो गए, पता भी नहीं लगा। Anyway, great. Ashok, so जाने से पहले any message to the youth of today, especially to the youth of Bilaspur and Chhattisgarh from your Yes, side? sir. Yes, sir, definitely. I have many things to say. I can go on and on. I talk too much. I'm a talkative person. But sir, yes, स्टूडेंट के लिए मैं 2-3 चीज बोलना चाहूंगा सर, for to conclude. पहला तो सर, they have to focus on revision. हम पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं। Because revision is a very annoying job, sir. वो रिवीजन हमको होता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका होता है कि हम आधा भूल चुके हैं, और फिर वो पन्ना पलटता नहीं है पीछे। हमें पता है वो इट इज देयर इन द बैक ऑफ द पेज, पर वो होता नहीं है सर। पर रिवीजन इज द की सर। आपने अगर आज कोई भी फैक्ट पढ़ा है, सुबह पढ़ा है, इट इज मोस्ट लाइकली दैट यू विल फॉरगेट बाय द इवनिंग। वो आप भूल ही जाओगे। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, उन्हीं को याद रहता है, और हम तो नहीं है सर, वी आर एवरेज। और जितना मुझे समझ में आता है, ज्यादातर एवरेज ही। तो उनको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और उनको रिवीजन का पैटर्न अगर चाहिए तो रिवीजन के बहुत पैटर्न भी है सर। बहुत लोग फॉलो करते हैं रिवीजन के पैटर्न। अगर आपने सुबह किसी चीज को पढ़ा है, तो आप कोशिश करिए कि बाय द एंड ऑफ द इवनिंग, बाय द एंड ऑफ द डे, आप कम से कम उसको 3 बार पढ़ लो। अगर आपने कोई डेट पढ़ा हुआ है कि 1950 में महात्मा गांधी इंडिया आए थे अफ्रीका से, तो आपको हो सकता है कि महात्मा गांधी याद ना रहे, आप एक बार महात्मा गांधी पढ़ लो। हो सकता है आपको अफ्रीका याद ना हो, आप एक बार उसको अफ्रीका याद करो। हो सकता है आपको 1915 याद ना हो, आप तीसरी बार 1950 याद कर लो। फिर बहुत ही कम चांस है कि आप उसको दोबारा भूलोगे। पर हम करते क्या है सर, सुबह पढ़ लिया, फिर राम भरोसे फिर वो उठता नहीं है दोबारा। और दिस we all face this problem sir. It is not the case of a single or individual. ये हर किसी के साथ होता है।
और फिर का सेल थ्रू कौन होता है सर, सक्सेस किसको मिलता है, जो इसका इसको जानता है कि रिवीजन इज मस्ट, वो करना Yes. ही करना है, उसके बिना Yeah. कुछ होगा नहीं सर। बहुत सारी बातें डिसिप्लिन वगैरह सब जानते ही हैं, पर मेरा जो जो सबसे ज्यादा एम्फोसाइज रहता है वो रिवीजन पे रहता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है सर कि रिवीजन करने पे आप हमेशा एक कदम आगे रहोगे, यू विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ अदर्स, आपको रिवीजन Yeah. करना ही करना है। और मेरे साथ सर बहुत सारा ऐसा भी है, मैं यूपीएससी की प्रिपेयर करते करते बहुत सारी चीजें पढ़ते भी गया, तो सर और भी बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, जैसे आप मैंने बताया सर कि लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करो आप, चाहे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। और एक बहुत अच्छा और कोट है सर, नॉलेज अराउंड यू, आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई रहेगा जो आपको कुछ ऐसा बता देगा जो आपको शायद कभी नहीं पता होगा। आप डिस्कस करो उनसे कि आपके इस मैटर में आपके क्या व्यूज हैं, आपको डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। कोई भी टॉपिक चल रहा है, जनरल टॉपिक चल रहा है, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल। मैं वहाँ मेरे जो मैं फ्रेंड्स थे वो जानते हैं सर, वहां पर मैं अपना जो ये फोन है स्मार्टफोन, ये मैं हमेशा सेंट्रल लाइब्रेरी में छोड़ कर आता था रात को, मैं कभी इसको घर लेके नहीं जाता था, क्योंकि घर ले जाओगे या फेसबुक चलाओगे या पता नहीं क्या क्या करोगे। मैं घर जाता था, मैं सिर्फ वहाँ बुक्स पढ़ता था, जो भी डाउट्स होते थे फिर मैं लाइब्रेरी में आके, वहाँ कंप्यूटर सेक्शन है आपने देख ही रखा है, 50-60 वहाँ पर कंप्यूटर है, वहाँ इंटरनेट एक्सेस है, वहाँ बैठा अपने डाउट क्लियर किया और फिर पढ़ने बैठ गया, और जो भी काम है फोन का वहीं पर किया। तो अगर आप ये कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कठिन काम है, फोन छोड़ देना रात को, अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा ये। और I think क्योंकि सर disconnect हो गया. पढ़े बिना काम नहीं होगा। आप स्टूडेंट के लिए सर एक श्लोक भी है, मैं थोड़ा याद कर पा रहा हूँ अभी, जैसे यहाँ पर है, आपकी आवाज कट रही है. We are not able to hear you. I think you're disconnected. I think there is some problem in the internet connectivity from Ashok. And okay, so it was a very good, fruitful this thing episode today with Ashok जो उन्होंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस शेयर की, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जो आई थिंक जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो गौर करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज this is going to help people, and will I'm sure कि with in very near future यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं जो बिलासपुर को बिलोंग करते हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा. आई थिंक हाँ अशोक, वी लॉस्ट यू इन बिटवीन, आपकी नेट कनेक्टिविटी का सर प्रॉब्लम आ रहा, बट या इन एनी वे वी हैव जस्ट वाउंड अप आल्सो, खत्म भी हो गया. एंड लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड बिफोर वी क्लोज दिस. आई एम वेरी ग्रेटफुल have thought about me that I am capable enough to guide others or talk about my journey, because I personally I have not done very significant, or I have not achieved very significant position in my life. I am still continuing and working hard to pursue my dream and to become what I always wanted to. And it has been very generous and a very good conversation, sir. Thank you so much for having me here. Thank you, sir. Thank you very much and wish you all the very best. And I'm sure that this Thank you, particular sir. recorded version, and people will hear, especially the UPSC aspirants and PSC aspirants, they will be motivated, and there are so many things to learn from your talks. Thank you very much and wishing you all the Sir, very best. thank you, sir. Thank you so. Thank you, friends, for being there throughout, and it's almost an hour plus, almost an hour. And thank you very much. Till we meet next week with a new guest and with a new unsung hero. Take care of yourself, be safe, be healthy, and Jai Hind.